औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanvir Ahmed, Principal Tanvir Academy of Commerce, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इस वक्त बीकॉम पार्ट 1 की और पार्ट 2 की डेटशीट आ चुकी है। हम लोगों ने स्पेशल सुपर कमांडो क्लासेस का आगाज़ किया है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोकस की जाती है। उसी सिलसिले में MBF है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि कितनी आसान तरीके से बच्चों को तैयारी कराई जा रही है तनवीर एकेडमी में। क्रिएटिव राइटिंग करवाई जाती है, किस तरीके के साथ करवाई जाती है, आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको इंशाल्लाह इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज कमर्शियल बैंक। व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज कमर्शियल बैंक। गिव अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। So my dear students, our today's discussion is relating with the central bank and commercial banks. We are going to have the comparative study between a central bank and the commercial bank. आज की जो वीडियो है वो 100% बेस कर रही है कि बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या हैं और सेंट्रल बैंक क्या है, और दोनों में क्या फ़र्क है, एक सेंट्रल बैंक में और एक कमर्शियल बैंक में। तो इसी सिलसिले में आज आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि ओवरऑल बैंक क्या है। मेरी पिछली वीडियो जिन्होंने देख ली है उनको पता होगा कि बैंक एक बिल्डिंग के अंदर बिजनेस होता है, आपने देखा होगा। ये करती क्या है बिल्डिंग, इसके अंदर बिल्डिंग में हो क्या रहा है कि इसमें डिपॉजिट्स आ रहे हैं और एडवांसेस जा रहे हैं, यानी एडवांसेस और डिपॉजिट्स का बिजनेस है कारोबार में से। यानी बिजनेस बैंक का इस तरह का है कि ये लोन्स देता है और डिपॉजिट्स लेता है, एडवांसेस जिसे कहते हैं। एडवांसेस क्या है, हमारे लोन्स। एन से क्या बनता है, ये नेचर ऑफ बिजनेस है। के से क्या बनता है, इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। तो ये बैंक बन गया। उससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, याद होगा आपको, किसकी जी, कमर्शियल बैंक्स की। प्रोफेसर जेएम कीन्स ने क्या कहा था, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स। ये प्रोफेसर जेएम कीन्स ने कहा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मुकम्मल डेफिनेशन इन राइटिंग बोर्ड पे आपको नजर आ जाएगी। प्रोफेसर गिलबर्ट ने क्या कहा है कि बैंक इज, ये क्या है, बैंक डीलर इन मनी। बैंक डीलर है किसका, पैसे का। RSAF ने क्या कहा, बैंक्स आर नॉट merely a trader in money but also an important manufacturer of money। ये तीन डेफिनेशन लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। आज इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि सेंट्रल बैंक आपके ज़हन में आ जाए। इसके लिए चंद निशानियां मैं आपको पेश करता हूं। देखिए, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक। सबसे पहला सवाल है, ये क्या है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसी चीज ने आगे आपको डिफरेंस में, बहुत मुख्तसर वीडियो आज की, स्किप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह, लिहाजा देख लीजिएगा। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बैंक। ये निशानियां दे रहा हूं कि सेंट्रल बैंक कहते हैं किसको, दैट इज ओनली अ सिंगल बैंक नॉट हैविंग एनी कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। इसका मार्केट में इस जैसा कोई बैंक नहीं होगा। एंड सेंट्रल बैंक इज द गार्डियन ऑफ मनी मार्केट।
सेंट्रल बैंक इज आल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। प्रोफेसर हॉटरी कहते हैं सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंकों की आखिरी पनाहगाह है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक हु इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये ज़र एतबार के ऊपर कंट्रोल करने वाला बैंक है। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक that plays the role of a leader in the money market, and central bank is a bank that has the monopoly of note issue. Central bank is a bank that fixes the monetary policy of a country. Central bank is a bank that is the custodian of the reserves of the government. Central bank is a bank that fixes the forex rate, that is the foreign exchange rates. Central bank is a bank, according to Professor Hotry, is the lender of last resort of the commercial bank. Commercial बैंकों की आखिरी पनाहगाह है। Central bank is a bank that controls the inflation and deflation in the country. अफरातेज़ार और तफरीतेज़ार पे काबू पाने वाला। Central bank is a bank who has introduced, especially with reference to Pakistan, that has introduced the Islamic banking in Pakistan. Central bank is a bank that has a supremacy in the country. Nobody is competitor that has the supreme authority to control and to regulate the monetary supply of money. Central bank is a bank that is responsible for the economic growth and development of the bank. So such a bank is called central bank. उम्मीद है इतनी सारी बातें सुनने के बाद कुछ तो सेंट्रल बैंक के बारे में पता लग गया होगा। अब आते हैं आगे। व्हाट्स द डिफरेंस? बहुत मुख्तसर सी वीडियो है, प्लीज देख लीजिएगा। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड दैट इज सेंट्रल बैंक एंड दैट इज कमर्शियल बैंक। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। सिर्फ मैंने एक लफ्ज क्रिएटिव राइटिंग करवाई जाती है तनवीर एकेडमी में और बच्चे खुद वो लाइनें लिखते हैं। हम सिर्फ उनको पॉइंट देते हैं, बच्चे खुद लिखते हैं और खुद लिखने वाला ही बेटा पेपर में कामयाब होता है। तो देखिए, ऑनरशिप, सेंट्रल बैंक इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, and commercial bank, if they are in the ownership of the government, that will be controlled by the government. If it is in the ownership of private organizations, so the private people will definitely own and control the commercial banks. तो प्राइवेट बैंक्स भी हो सकती हैं, कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट के बैंक्स भी हो सकती हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई। नोट इशू, अ सेंट्रल बैंक हैज, ये देखिए एक तरफ टिक लिखा हुआ है, एक तरफ क्रॉस किया हुआ है, इसकी एक लैंग्वेज है, इसको समझ लें। तो सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली ऑफ नोट इशू। Commercial banks have no monopoly of note issue. They have to work according to the instructions of the central bank. They are the pipelines of money. Central bank उस पाइपलाइन से पैसे गुजारता है जो कमर्शियल बैंक से। एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल बैंक इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and if it is owned by the government, so the government will have a control on the commercial banks. And if in the ownership of private, so the private organizations that will own and that will administrate the commercial banks. Supremacy, अभी बताया आपको, central bank has a supremacy in the money market. Commercial banks have no supremacy in the money market. Object of the central bank is to regulate the monetary supply of money and to promote maximum welfare, to control inflation and deflation, and to increase or to decrease the volume of currency circulation. So that is the object of the central bank. So not for profit, only for welfare. ये आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट होती है, रियासत जो होती है वो वेलफेयर स्टेट होती है, बट द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट हैविंग एनी कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, दे आर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. सो कमर्शियल बैंक्स वर्क फॉर द प्रॉफिट्स, सेंट्रल बैंक डज नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट. ऑब्जेक्ट में बात समझ आ गई जी आपको? फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, all the forex rates are fixed by the central bank.
and all the commercial banks have to follow the forex rates. जो central bank fix करता है उन्होंने उसको implement करना होता है. Formation, central bank is formed by the government. No other authority has any right to form a central bank. It is only formed, controlled, organized, regulated by the central government. And commercial banks, they can be formed by government or by the private organizations. Public dealing, central bank has no public dealing. It's not the bank of the public. So that's why we can say there is no public dealing. And commercial banks are having the dealing with the general public. So that's why we can say that the public bank is the commercial bank. Competition. A central bank has no competition in the market as no other central bank is there. So that's why there is no competition of central bank. Commercial banks have a lot of competitors in the market. Habib Bank है तो उसके साथ मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी है, अलाइड बैंक भी है, यूनाइटेड बैंक भी है. तो बहुत सारे हमारे पास बैंक्स हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपटीशन सेंट्रल बैंक का किसी के साथ नहीं है, कमर्शियल बैंक का एक दूसरे के साथ हो सकता है. लीडर, सेंट्रल बैंक इज द लीडर ऑफ द मनी मार्केट and commercial banks have to work under the leadership of central bank. If they are scheduled banks, so they have to work under the leadership of central bank. Discounting of bills, central bank discounts the bills of the commercial banks and commercial banks discount the bills of their customers. Custodian, a central bank is the custodian of reserves of the government as well as of banks. ये बैंकों के और गवर्नमेंट के रिजर्व्स की हिफाजत करता है. कस्टोडियन मुहाफ़िज़ को कहती है. तो कमर्शियल बैंक्स आर द कस्टोडियन ऑफ कस्टमर्स and hence we can say the customers' reserves or amounts or belongings or precious ornaments, jewelry, that is commercial banks are the custodian of those things. Economic policies. A central bank fixes the economic policies. Central bank fixes the economic policies and commercial banks have to implement the economic policies which have been determined by the central bank. जो central bank अपने policies बनाता है उन economic policies को implement commercial बैंकों के through किया जाता है. Growth of banking. Central bank is responsible for the growth and development of banking structure in the country. Commercial banks are not responsible for the growth and development of the banking. Public bank. Central bank is not the public bank. ये repeat हो गया point. Commercial banks are the public bank. Transfer of money. Central bank transfer the amount of the banks and amounts of the government from one place to another place. And commercial banks transfer the amount of the people or rather customers from one place to another place. Clearinghouse function. A central bank provides the clearinghouse function. ये clearinghouse क्या है? हबीब बैंक ने अलाइड बैंक को 10,000 रुपये देने हैं, मिसाल दे रहा हूँ. तो सेंट्रल बैंक एक डिस्काउंट वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन देता है. तो हबीब बैंक ने चूंकि देने हैं और अलाइड बैंक ने अगर लेने हैं तो हबीब बैंक का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और अलाइड बैंक का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा. इस तरह से लाखों करोड़ों की डीलिंग डेबिट और क्रेडिट के जरिए से तय हो जाती है विदाउट द यूज ऑफ मनी. बट कमर्शियल बैंक्स हैव नो क्लियरिंग फैसिलिटी. क्लियरिंग हाउस की कोई फैसिलिटी कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं. Metallic reserves of the government as well as of banks are kept in the central bank and the metallic reserves of the general public, they are kept in the commercial banks. So last of all,
I would like to say that these are the type of the things which are going on Tanvir Academy. तो हम बच्चों को थोड़ा सा क्लू देते हैं कि भाई आपने अब क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपके पेपर पास आ गए हैं, तो आप इसको लिखने की आदत डालें। अभी इस क्लास में मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये दिखा दीजिए बच्चों को भी स्पेशली कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद इन बच्चों ने ये क्वेश्चन लिखना है। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, बेटा लिखेंगे आप लोग? शाबाश। ये तमाम बच्चे जो बैठे हुए हैं बेटा, इन्होंने इस क्वेश्चन को लिखना है और यही हम लोग सिखा रहे हैं कि पेपर में जो बच्चा लिखेगा कामयाब वही होगा। रट्टा लगाना बच्चों छोड़ दें, रट्टे में कुछ नहीं है। आप 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन जो आपकी अपनी क्रिएशन है वो लाइफ टाइम होती है। तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करीम आपको पेपरों में बहुत अच्छे नंबरों में कामयाबी अता फरमाए। और ख़ास तौर पे जो बच्चे इस वक्त परेशान हैं पेपर्स की वजह से, तो वो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। हम आपके लिए खुसूसी तौर पे दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको बहुत अच्छे नंबरों में कामयाबी अता फरमाए और दुनिया भी अता फरमाए और आखिरत भी आप लोगों को अच्छा इनाम अल्लाह ताला अता फरमाए। और दुनिया में अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको खुसूसी इनामों कराम से नवाजे। इस नेक दुआ के साथ कि आप अपना और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।